सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। एंड ऑफ कोर्स आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड जहाँ पे हम बहुत सारी गर्मा गर्म बातें करने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा लग रहा है ना? ट्राई कलर मैंने अपनी आंखों पे बिठाया है, देखो मतलब मैंने अपने झंडों को सर आंखों पे उठाया है कि नहीं? एंड गाइज आई फॉरगॉट टू से आउट ऑफ एक्साइटमेंट वेलकम बैक टू गो गजल गॉन। आज है हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे और हम आज के दिन बात करने वाले हैं वो बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जो हम हिस्ट्री बुक्स में बंद करके भूल चुके हैं, जा चुका है हमारे दिमाग से। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? थोड़ा सा जंग हटाते हैं और कुछ कलाकारी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। हम में से कितने लोगों को पता है that India had got independence on 18th July 1947 officially, but at that time Viceroy was Mr. Lord Mountbatten and he was also the Governor General. So he decided that we will not celebrate our official Independence Day on 18th July. Instead, we will celebrate it on 15th August. Kyun? Why did he decide to do that? Because on 15th July 1945, which is 2 years ago our independence, because we got independence in 1947. So in 15th August 1945, Japan had surrendered in World War II and it was considered as a very unevitable date. That's why Lord Mountbatten had decided that India will celebrate its Independence Day on 15th August officially in 1947. So our neighbor country Pakistan celebrate its Independence Day on 14th August and we celebrate it on 15th August, right? So now how this date came up? Now Lord Mountbatten had received invitation from both the countries that his presence will be mandatory in the auspicious occasion of celebration of liberation and independence. So he had to go in both the events, so he could not be present at both events on the same day. So therefore Pakistan celebrate its Independence Day on 14th and हम मनाते हैं 15 अगस्त को. Did you even know this? That along with India, on 15th August, there are 4 other countries which celebrate their national celebration like an Independence Day. It's Korea, North and South both. We also have, इसका बहुत difficult है pronunciation, Liechtenstein. It's in Europe. They speak German often there. Then also even Bahrain celebrates its national day on 15th August and Republic of Congo. ये actually मुझे भी नहीं पता था. जब मुझे पता चला ना, I was like, wow, nice, yeah. See, good to know information. Did you even know that when we got an independence and our Independence Day was officially announced, we did not even have नेशनल एंथम. यस, हमारे पास नेशनल एंथम नहीं था. सो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक बहुत अच्छा पोएम या आप गाना कह लो, भारत भाग्य विधाता करके एक सॉन्ग लिखा था. उसको हमने उनसे परमिशन लेके अडॉप्ट किया एंड वी मेड इट एज आवर नेशनल एंथम एंड वी रीनेम्ड इट एज जनगण मन. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने न कि सिर्फ हमारा नेशनल एंथम लिखा है, बट आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इवन बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है. कैसे? मतलब उनके लिए ऑफिशियली लिखा नहीं है. उनका एक बहुत फेमस सॉन्ग हुआ करता था, अमार सोनार बांग्ला. आई थिंक इट मीन्स दैट बंगाल इज मेड ऑफ गोल्ड, समथिंग लाइक दैट. सो व्हेन बांग्लादेश हैड अ फाइट ऑफ लिबरेशन and they got finally like freedom, they used the first 10 line of the song as their national anthem. So this is how Rabindranath Tagore becomes a national anthem writer not only for India but also for Bangladesh. So even like the way we did not have the national anthem, we also did not have our national song. So Bankim Chandra Chatterjee had written Vande Mataram and on 24th of January, मतलब 26 जनवरी के 2 दिन पहले 1950 में we adopted Vande Mataram as our national song. Isn't it great, guys? Actually, I'm in love with both the songs. I mean, seriously, it's one of the most beautiful anthems we have, I feel. Did we even know that our flag, our tricolor, was designed by Mr. Pingley Venkaiah? I am sorry if I'm pronouncing the name incorrect, but he's called Mr. Pingley Venkaiah. This is
the best, I can tell you. And he was the designer of our tricolor flag. अगर आपको याद होगा तो initially in our झंडा we used to have the charkha, which symbolizes Gandhi ji का चरखा. If you remember and if you just refresh your memory with the history book, when we started with the boycott movement, जहाँ पे हम बाहर की कोई भी बनी हुई चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, we started making our own fabric like खादी, मतलब कॉटन से बना बना के हम चीज़ें करते थे, जिसको हम आंदोलन बहुत बड़ा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वो सिंबलाइज करता था. बट ग्रेजुअली द चक्रा वॉज रिप्लेस्ड विद द चरखा वॉज रिप्लेस्ड विद द धर्म चक्र, विच symbolizes all the states present in India. So yes, these both the charkhas and the chakras are very important for Indian history. Whenever you see a flag of India which is being hosted और कहीं पे भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है, या अगर आप देखोगे डिप्लोमैट्स या एम्बेसी या एम्बेसडर्स की गाड़ियों पे लगा होता है, वो झंडा हमेशा खादी का बना होता है. और कर्नाटका की एक लोकल ग्रुप कंपनी है जो बहुत सालों से यही काम कर रही है, झंडे प्रोड्यूस करती है, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट हाउ इंडिपेंडेंट वी are, and at the same time it also sustained the respect and the authenticity of the movement which we had while fighting for independence. Did we even know that Pandit Jawaharlal Nehru, although he's our former first Prime Minister of India after independence, but he did not win this position during an election, and Sardar Vallabhbhai Patel was being elected as a former Prime Minister, but Pandit Jawaharlal Nehru was not ready to undertake any position which was a second former position, so he wanted to be a Prime Minister of India, hence the decision was taken in his favor. After we had received an independence, Gandhi ji always wanted to dissolve the Congress party. Yes, I'm talking about the same existing Congress party which you see right now. It was formed at that period of time wherein their objective and the goal was pre-assigned as independence. So once the independence was already being attained, Gandhi ji wanted to dissolve it and there shouldn't be any Congress party. That was the thing for him, but he got assassinated on 30th January. That is why his decision could not be taken forward. Thus Congress party remained the way it was since then until now. So when we got an independence on 15th August 1947, we did not have our own independent constitution which could make India a republic. That is why under the supervision of Dr. Rajendra Prasad and Mr. B.R. Ambedkar, who drafted the entire constitution together, our official Republic Constitution of India was being released on 26 January 1950. That is why 26 January is also considered as one of the most important occasion for India, because we were officially declared republic, मतलब proper तरीके से हमें स्वतंत्रता मिल गई थी. India is the only country, guys, which never did invasion on any other country. मतलब हमने अपनी तरफ से खुद कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है, इसीलिए हम अपने आप को शांति प्रिय देश घोषित करते हैं. बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि whenever we get attacked we never retaliate back. We do retaliate back as well, because हमें जवाब देना बहुत अच्छे से आता है. So हम वैसे पंगे में पड़ते नहीं हैं, बट अगर हमसे कोई पंगा लेता है तो हम फिर छोड़ते हैं. Great revolutionaries like Mr. Mahatma Gandhi, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, वीर सावरकर और पता नहीं झांसी की रानी, मैं बोलती रह जाऊंगी, मतलब मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं. I am also very grateful to all these memorable people who were the real hero and heroines of our country, who fought for our independence. जो आज हम एक डेमोक्रेसी और रिपब्लिक और सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करते हैं फ्रीली विदाउट हैविंग एनीथिंग रनिंग एट द बैक ऑफ आवर हेड. आई थिंक हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज our root is something, our nation is something which can never be taken away from you. So we should always have that respect for the nation where we come from, because eventually it represents us and vice versa. With this great spirit, guys, let's stand united together at all point of times. And yes, let's have a good one. And I hope you enjoy this Independence Day. Have fun, guys. Laddu बांटो, जाओ laddu बांटो. मेरा ये
वीडियो भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि मुझे आजकल के रेलेवेंट मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जो चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में स्ट्रीम करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, सो दैट आई कैन ब्रिंग दोज मुद्दास आउट फॉर यू ऑल। बिकॉज मुझे नहीं पता कि हम उस चीज़ के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं, बट जितना हमारे बस में है हम उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, हम उस मुद्दे को उठा सकते हैं और एटलीस्ट आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सो इफ़ यू डिड लाइक दिस कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हर जगह कर दो। एंड जय हिंद, जय भारत।